हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैच ऑन पॉडकास्ट। मैच ऑन पॉडकास्ट पे हम लाते हैं अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, उनकी बिहाइंड द सीन की जर्नी, उनके सेक्रीफाइसेस एंड हाउ दे हैव कम अप इन देयर लाइफ। आज हमारे साथ है मिस्टर निखिल पटवर्धन। ही इज अ फॉर्मर रणजी प्लेयर. ही हैज बीन एम्पायरिंग इन द वेरियस IPL मैचेस एंड द वेरियस BCCI cricket matches, and he's a proud father of Soham Patwardhan. Soham, who is currently under-19 captain of India, has recently played a series against Australia. तो सर से हमें बहुत सारी टिप्स मिलेगी पेरेंटिंग के बारे में, अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में. सो डू जॉइन दिस पॉडकास्ट एंड लर्न फ्रॉम इट. वेलकम टू दिस मैच ऑन पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. तो सर से हम जानना चाहेंगे सर, कमिंग फ्रॉम द क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, आपके फादर भी क्रिकेट में थे, आपने रणजी खेला, एंड ये पूरा जनरेशन जो आपका चल रहा है लीगेसी, और सोहम से we have seen that he is right now representing India. So run us through your journey and let us know how being a sports kind of generation, जो एक पूरी फैमिली या लीगेसी आप लेके चल रहे हैं, तो वो कैसे आपकी लाइफ को शेप कर रहा है, और how things have been. Have you seen the sports group grow from all these years? So, like Ankit, to be honest, we live sports, like we live cricket. We don't have any other life. Like in our home also, we don't have any other topics to have a chat with. Our day starts with sports, whatever. It's not necessarily cricket. Sometimes it's Wimbledon going on. We'll have a Wimbledon game in the home. We'll all watching Wimbledon matches with same intensity which we watch the cricket. Then when it comes to Football World Cup, we all are together. We sit and so that's how it goes. Like we never talk about studies because we all are not good in that. So to be honest, we live sports, and sports has given us the time which we have given them. It has rewarded us with plenty. Okay sir. So sir, because this podcast या जो भी हम shoot कर रहे हैं, this goes to a lot of parents. It goes to a lot of kids across the country, and India जिस स्टेज पे भी खड़ा है, we are eyeing 2036 Olympics, and sports has now, after COVID and the kind of transfer it has taken, and everyone, the kind of infrastructure which are coming up in India, the different sports from pickleball to cricket, the kind of turf crickets we have. So हर पेरेंट के मन में शुरू से रहता है कि वो अपने बच्चे को कहीं उसमें एक टैलेंट तो नहीं छुपाया हुआ है, या कहीं तो वो स्पोर्ट्स पर्सन तो नहीं है, लेकिन वो ट्राई करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो जर्नी कंप्लीट नहीं होती है, या टैलेंट निकल नहीं पाता है. सो आपने, क्योंकि वो बहुत देखा है, एक सोहम की जर्नी देखी है, आपकी खुद की जर्नी, बिगिंग टू द स्पोर्ट्स फैमिली. सो इफ़ यू कैन हेल्प आवर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि टैलेंट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, अपने बच्चे के अंदर पोटेंशियल कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, और उस टैलेंट को नर्चर करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं. Good question, Ankit. But as far as I am in cricket from last 35-40 odd years, what I have noticed, or even in sports, I am seeing the sports from last 35-40 years. What I have, talent never stops. You always get that means to take it out. They are always, वो बोलते हैं ना, जौहरी लोग वो हीरे की तलाश में रहते हैं, और हीरा कभी छुपता नहीं है. So if somebody is talented, and talent is something you're born with, only thing is you can polish it with the time. Coaches का काम है उसको polish करना, उसे fine tune करना, ताकि टैलेंट तो ऊपर वाला वरदहस्त देता है. We have a completely sports background. My father was former cricketer, then I continued. My wife is a national table tennis player, then my daughter is pursuing with table tennis. Soham is there in cricket. So cricket is any sports you take. If you keep on persevering with your dreams, you are definitely going to be rewarded. That is for sure. Only thing is you have to keep your chin up when the chips are down, and that is the test of your character. So that character has to be there in any sportsman. Talent is there, hard work is there, but perseverance and just that belief and courage, that has to be well within. What advice would you give to parents? So example, if they are identifying a talent, or if they are still confused, because a lot of people, parents and kids are confused. They don't know, and they feel that cricket is, or say, the main league sports are tough journey in India, because there's so much of competition, people running here and there. So somehow, their confusion, and at times, they might
they kill that talent. I'm not saying kill, but they might not be able to nurture it effectively. So what is your advice to parents and how they should nurture the kids towards their goal? First message I try to give to parents: don't see your dreams in that kid. He has bring his own destiny. He has bring his own dreams. So don't try to put मुझे इसे बड़ा क्रिकेटर बनाना, इंडिया खिलाना, इसलिए मैं इसके पीछे लग जाऊँ. No. If he is destined and if he is hardworking, he will make his way on his own. आपका पीस मत खोइए. और even I'll say that trust the coaches, trust the system. Don't try to become a coach on themselves, because I have seen many parents doing it. अरे आज तू वो नहीं खेला. No, leave it to player, leave it to coaches. Coaches are there to help them out in their odds. तो कई बार अच्छे प्लेयर्स हमारे यहाँ पेरेंट्स के प्रेशर के कारण भी स्टेप बैक हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है. कई टैलेंट है जो पेरेंट्स का प्रेशर रहता है कि मैं आज जल्दी आउट हो गया तो मैं घर जाके मुझे मम्मी पापा पूछेंगे कैसा आउट हो गया, हम इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, हम ये. सो जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट. आई नो बीइंग अ पेरेंट इवन आई एम फेसिंग सेम प्रॉब्लम्स, बट हमें अपना कंट्रोल और नर्व्स को होल्ड रखना है, तभी वो बच्चा अच्छा कर पाएगा ग्राउंड पे. यदि हम उसे फ्री हैंड और ओपननेस नहीं देंगे तो समवेयर ही इज इन दैट प्रेशर ऑफ प्लीजिंग यू रादर देन डूइंग जस्टिस विद द गेम. सो इट्स अ बिग रोल पेरेंट्स हैज टू प्ले. Great, great. So sir, अगला क्वेश्चन इसी related to this question, coaching. So coaching is obviously any sports coaching is the most important aspect, and when say grassroots sports की जब हम बात करें जब बच्चा शुरू में start कर रहा है, so coach is the most the person whom he looks into, and he inspires or transpires that person to become a great sports person. लेकिन कोचिंग का जैसा कि आपने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि पेरेंट्स को भी कंफ्यूजन रहता है, एंड कोचेस का लॉट ऑफ टाइम्स they might stuck to a coach, and the kids might not do that well. They want to change the coaches quite frequently. So how do they reach out to the right coach, and what is the approach they should when they find out a coach, तो वो approach कैसा होना चाहिए और किस तरीके से उनको उस coach के साथ काम करना चाहिए? Coaching is something where you have to bring that kid to your level, or rather I'll say you have to go to that kid to his level. Sorry, I'll just correct myself, because many coaches, what they try to do, they try to bring that 14-year kid to think like a 40-year-old man, which a kid can't do. So the great coaches, what they do, they leave that space with that kid. Okay, you're 14-year-old, your thinking process will be like a 14-year-old. I can't expect you to think like a 40-year-old man. So then there was that repo starts. Then that kid starts believing that coach, no, he gives me that space, he has that trust in me that whatever I'll take the decision at that moment, because it is momentary. The sports is a momentary. Well, on that moment you feel like hitting the ball, you make it, you will hit, or on odd days you may not. So you may have a bad day. So what coaches do that, okay, they back them. No issue. You try next time. What best you can do it is what you missed or what good you can do next time. So that's where coaching is all about. It is not about we expect you to do things like this, but not necessarily that every kid will be able to. You have to make out that these good coaches have that sense of taking out that talent. So luckily we have Mr. Sanjay Jagpal at our time. I've seen him coaching. He has made coaching as simple as possible, because I never seen that man to get like irritated, or even if we get out on 0 for match, okay, he'll say how you got out. So I will tell him, so he'll come up with, okay, just try to avoid it next time. Next time do this way, you may get succeed. And he never put pressure on me. Because he know everybody wants to do good. Someday you will do, someday you will not. So that's where coaches has to be smart, and many coaches are there. So sir, सोहम की जर्नी के बारे में थोड़ा सा everyone would like to know is under 19 level पे भी इंडिया में जाना and crossing all these hurdles. So how he has kind of कितने hours he used to coach,
या कितने आवर्स वो क्रिकेट खेलते थे, स्टडीज़ को कैसे बैलेंस किया, फैमिलीज़ को कैसे बैलेंस किया, एंड चाइल्डहुड वो तो एक बचपन जो रहता है, एक बचपना जो छीना जाता है एक बच्चे से जब वो डेडिकेटेड हो जाता है. तो वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अबाउट योर थॉट्स ऑन हिज जर्नी एंड हाउ इज कोप्ड अप टू दिस लेवल, एंड ऑब्वियसली वी होप दैट ही goes and plays for India very soon. लेकिन वो जर्नी थोड़ा सा if you can share with us. So it started from the age of 2-3 when I used to bowl him in the home. So he was having that ball sense. Maybe it is genetical, like cricket runs in our blood. So he was a bit. He started with that sense of ball sense, what you call about. So he has that natural sense of ball. So he started hitting the ball. So we never thought like we'll put him in. And since we have that background of sports, so we never thought about कि इसको पढ़ाई में डालना है या क्रिकेट में डालना है. It was understood that ये क्रिकेटर ही बनेगा. Whatever level he plays, it all depends on many aspects are there. पर हमारा पहला सोच यही था कि क्रिकेट खेलेगा. इसमें है वो बॉल सेंस है, क्रिकेट का सेंस है. सो एज ए फादर और एज ए फॉर्मर क्रिकेटर वो मुझे समझ में आ गया कि इसमें क्रिकेट है. अभी मेरा जॉब बढ़ जाता है या फैमिली का काम बढ़ जाता है, उसकी मदर, उसके ग्रैंडफादर, उसकी ग्रैंड मदर, फैमिली का कि आप उसे सपोर्ट करें, जो कि हमारे घर में नेचुरल मतलब स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होने के कारण उससे सपोर्ट था हर तरह. पढ़ाई में भी वो अच्छा है, इज़ वेरी गुड इन स्टडीज एंड क्विक लर्नर, क्विक ग्रास्पर ऑफ एनीथिंग. दैट व्हाट हेल्प्स इन क्रिकेट ऑल्सो. क्रिकेट में भी उससे कोचेस जो बताते जल्दी पिक करता है. सो दैट सोहम गॉड. Then from NDPS we shifted him to Devashish Milos's club, where he was with this Dev's Academy. Right. Initially he was noticed by Amay Khurashia. He was with this MPC Academy. So उन्होंने उसको academy की shortlist किया बच्चों में और एक कैंप था. So he was very impressed. वो बोला निखिल इसमें क्रिकेट है, मुझे सिर्फ इसका कैरेक्टर देखना है, इसमें संभाजी है कि नहीं मुझे वो देखना है. तो देन ही सेड नहीं है, मतलब क्रिकेट है. नाउ इट्स ऑल योर जॉब, हाउ यू ये मतलब साचा है, अब आप इसको कैसे मोल्ड करते हैं ये आपकी जवाबदारी है. सो देन हाउ इट स्टार्ट्स. देन वो देव्स एकेडमी से इंदौर टीम, देन स्टेट एंड ग्रेजुएट स्टार्ट. तो सर आपका जो सारा क्रिकेट कनेक्ट था, आई थिंक वो दैट हैज़ हेल्प्ड हिम अ लॉट and that has helped you a lot to kind of take different opinions and connect with the right people at the right time. Exactly, yeah. Because many times in Mumbai also we have Manik Madgaikar, Parag Madgaikar. These are who are doing coaching in Mumbai. So whenever you go to Mumbai, I took him to them. So you get a different aspects of the game. You see the game from a different perspective. Then you have Chandrakant Pandit here, who is looking after the kids like he is the discipline. So that is the way you take good things from everyone. So that depends on that player's smartness. That he should not be adamant of नहीं यार अरे ये ऐसा ये नहीं. अब अच्छा चीज़ सबसे लेते रहिए और खुद का एक क्या बोलते एक अपना किला बनाते रहिए. So that's how it went. And कभी कभी पर हमारा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड होना एक क्रिकेटर के लिए किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए अच्छा भी होता है और कभी कभी बुरा भी होता है, क्योंकि हाँ और हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता एक तो बच्चा. कई बार नॉन स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाले पेरेंट्स को बच्चा हुआ अरे वो ऐसे ही हो गया वैसे ही हो गया, वो मैं ऐसा खेलने गया था वैसा. सो हमें पता है कि क्या होता है गेम में. वी आर ऑलवेज वी नो इट इज़ जस्ट स्पेशली क्रिकेट तो एक बॉल का खेल है. हमें पता है कि एक बॉल what goes through your mind that moment and it takes your game out of your hands. Empowering से भी आपको every day you're watching ball that closely, so you have got it helps. Yeah. It helps. I see the technique of the batsman. I remember when I was the fourth umpire in one of the test matches in India New Zealand. So as a fourth umpire we have the job of 12th man, like 12th man do in cricket. So I was sitting near the Indian dugout and there was a wicket fall of Indian team. So I saw the god of cricket walking down the stairs. That day as a cricketer there was a curiosity in my mind. I just see his expressions and
50,000 people clapping for you, the expectations of 140 crores, how this human being or this God reacts to that. So I got that opportunity to see him walking down the stairs and that his actions of doing it, and I saw nothing. So that day I realized, no, yeah, that there is some reason he's called the God of cricket. No, that pressure can bring you down or high, but he was not bothered. I think he got deaf, or he becomes deaf when he walk into the with the ground. And that day I realized, no, you need something different to be that sort of cricket. So that's why he's the God of cricket. And he scored 100 there or what? And that day I realized, oh, I still have goosebumps. And, The next question is like, so sports obviously, आज की तारीख में parents have to manage studies and metros and everywhere the cost of living is very high. And sports is again getting expensive day by day. क्योंकि you require all the gadgets, you require the expensive coaches. So इस aspect पे आपका क्या कहना है and how parents should actually manage the financial part of going through that sports journey, and when they should stop or when they should invest more? like I'll say first thing, if you are talented, you will be taken care by either NPCA, IDCA, or BCCI. Talent doesn't goes in waste. So and everybody want talented players और हर टीम को चाहिए. So हम एक बात अपने दिमाग में डालें, कभी पेरेंट्स आए सीन मैनी पेरेंट्स कंप्लेनिंग लाइक मेरे ही घर में जैसे मम्मी बैकग्राउंड नहीं है, तो ऐसा कभी होता ही नहीं इसके पॉलिटिक्स हो गया अगर इंडिया के नहीं. मुझे ऑनेस्टली पता था कि नो, आई वॉज नॉट नेवर इंडिया मटेरियल, बट आई सी द ड्रीम, आई सॉ द ड्रीम ऑफ प्लेइंग फॉर कंट्री. इसलिए मैं आज ये जो अचीव कर पाया हूँ कि एवरीबडी डजंट प्ले फॉर कंट्री. सम आर वो एक वो बोलते हैं ना एक स्टैंपिंग हुआ रहता है. दिस इज द फर्स्ट क्लास लेवल क्रिकेटर, इज ये नेक्स्ट लेवल का क्रिकेटर है. हम लोग बोलते हैं ये नेक्स्ट लेवल का टैलेंट है भाई, इसमें ये अलग है, मतलब भीड़ से अलग है. तो इसलिए पर आप यदि टैलेंटेड हैं, आपका बच्चा टैलेंटेड है, तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करिए. यदि उसमें आप देखते हैं कि इसमें परसिवरेंस बहुत है, ये करेजियस है, ये लगा रहता है, मेहनत बहुत करता है, आप थोड़ा और प्रोलॉन्ग करिए अपने ड्रीम्स को. मतलब उसको और खेलने दीजिए 15, 16, 17 तक. बट इफ़ यू देन सी दैट नॉट मच हैपनिंग, then parents or that kid somewhere has to take that call, because you can't go in like dark. हमें पता नहीं किस तरफ end up होने वाले हैं. So that's where the plan B comes into. Then you shift yourself to studies or whatever business you have, family business, and you can shift to. But what many parents or kids do, like if they are not being rewarded, still they continue or pursue with their, so in that percentage is very low of success. बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग जो 22 साल में या 25 साल में सक्सेस होते हैं. सो ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, बट देन द परसेंटेज इज वेरी लो. Sir, the next question would be like, Soham obviously is just 19 or say below 19, but अभी तक जो भी उसकी जर्नी है और जो भी आपका एक्सपीरियंस है, तो उसमें जो स्ट्रगल फेज आता है जहाँ पे शायद वो रन नहीं बना रहा था या उसको कोई इंजरी हो गई थी एंड ही वाज फीलिंग रियली डिप्रेस्ड, तो वहाँ से वापस कैसे आया वो, या आप कुछ शेयर करना चाहें जो हमारे पेरेंट्स और बच्चों के लिए उपयोगी हो. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम स्पोर्ट्स इज लाइक इंजरी प्रोन. आज आप खेल रहे हो, कल कुछ हो गया, या फिर बोला जाए आपका यू हैव सीन विद द कोहलीज एंड धोनीज ऑल्सो द बैड फेस कम. तो यहाँ पे कैसे छोटे बच्चे को, बिकॉज उसके पास उतना करेज हो सकता है उस टाइम होनी हो, कोचेस से उसको मिले नहीं मिले, लेकिन आप अगर ये आंसर करेंगे तो आवर ऑडियंस विल बी ग्रेटली बेनिफिट. So the first thing, belief. I know it's very easy to say self belief or ये और वो, but वो होता है प्लेयर में. नहीं, I'll bounce back. Injuries, I say, like you are dependent more on doctors, you are more on time. It needs time, but your back patch can be recovered by your thoughts and how your preparation is. If you are getting a long back patch, it means something lacking in your preparation or something is missing. Or if your preparation is even good,
टाइम इज देयर, जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट. वो मेरा टाइम आएगा वाला वो जो गाना, इट इज वेरी करेक्ट. आता है टाइम होता है, यू ग्रैब इट. सो यू हैव टू बी सेल्फ बिलीव. आई मीन आपका बिलीव का लेवल बहुत हाई होना, अदरवाइज यू मे गेट सकम विद कंडीशन. So coming out to the next question, so there are two strings attached to it. One is कि as a proudest moment आपका like you know क्या रहा आपकी लाइफ में, और सोहम से as a father you know what is the proudest feeling you got till now? So for me, I'll start with like I always, my preparation, my hard work was always to play for country. Although I was knowing it. I'm missing that X factor which is required to play for a country. So that I was knowing, which every individual should know. That assessment has to be there. Ankit, आपको खुद को assess करते आना चाहिए कि आप किधर stand कर रहे हैं. Then you will be able to take the decisions, right decision at right time. Because I quit cricket at the game of 30, where many people becomes experience और backbone हो जाते हैं टीम के. So I left. कई लोग बोलेंगे डरपोक था या whatever. So that's the individual call. But then I realized I will not be able to make a comeback due to some reasons. I don't know what. There are some physical reasons also with me. So then the opportunity came for umpiring. So I thought many people guided me, like Narendra Irvani told me, Nikhil, it suits your behavior or nature what you are. Like मुझे आदत था कि मैं दिन भर बैटिंग कर सकता था. सो एम्पायरिंग इज ऑल्सो लाइक दिन भर आपको एक ही चीज़ खड़े खड़े करते रहने का है. यू कैंट. तो बोले निखिल यू कैन डू इट. तो देन आई पास द BCCI एग्जामिनेशन विद दैट लोगो. यू फेल्ट प्राउड फॉर मोमेंट, लाइक कि मैं इसी के लिए सपना देख रहा था, इसी के लिए मैं 8-9 साल से जो मेहनत कर रहा था. सो क्रिकेट के रूप में नहीं आया तो एम्पायरिंग के रूप में आया. बिकॉज अल्टीमेटली यू वर्क फॉर दैट लोगो, BCCI लोगो, कंट्री लोगो, gives you pride, immense pride. So for me, doing IPL and becoming an BCCI umpire was a dream. And then for Soham, playing for, or I can say leading Indian team in under-19 is a proud moment. But again, being a cricketer, I know it's just a beginning, it's just a step. Then it has to be taken like it's an opportunity for him to go higher up the ladder. So he should not get what you call like he cannot get satisfied with this. And now the big job is of mine or my family. Just that he should not get reluctant with what he has got. This is just a step. Just move ahead. Just develop your skills day by day and become a good cricketer day by day. So, and playing for a country was the proudest moment for me so far, and I want him to play for the country. I'll suggest every kid to just you aim and prepare yourself to play for country. IPL is a byproduct. White ball is a byproduct. You aim to play for country. मेरे को इंडिया खेलना है, मुझे इंडिया को खेलना है. IPL बाय प्रोडक्ट है. कोई भी वाइट बॉल क्रिकेट उसका बाय प्रोडक्ट है.